बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. And dear students, today I am going to talk about communication models. First of all, I would be talking about what is a model, and then we would be talking about why do we need models, and then we will discuss the types and functions of model, and then there are 4 or 5 communication models that we have to study. First of all, let me tell you that a model is a systematic representation of an object or an event in idealized or abstract form. Models are somewhat arbitrary by their nature. In simple words, you can say that the a model is a systematic, graphical, diagrammatical representation or picture of some idea, some product, some object, which is actually is in the abstract form. I mean कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो आपके आपके जहन में है, उसको आप एक स्केच की फॉर्म में, उसको आप डायग्राम की फॉर्म में जब आप ड्रॉ करते हैं तो वो आपका मॉडल है. मॉडल जो है वो फिज़िकल फॉर्म में भी हो सकता है. मिसाल के तौर पे जब इंजीनियर जो है वो कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो वो बिल्डिंग बनाने से पहले एक मॉडल बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे आमतौर पे आप देखते भी हैं, तो उसको भी हम मॉडल बोलते हैं. बिकॉज अ मॉडल एक्चुअली रिप्रेजेंट द ट्रू नेचर, the actual nature of the object, of the product, of the idea, or the abstract idea which is in your mind. So you can say in simpler terms that the models are graphical, diagrammatical pictures or the representations of any object or an idea. ठीक है. तो इसी तरह communication models are merely pictures. They are even distorting pictures because they stop or freeze an essentially dynamic, interactive or transitive process into a static picture. Communication models, usually you can say that they are only the pictures, they are only the diagram or the sketches. They represent a rather डायनेमिक काइंड ऑफ प्रोसेस. यानी देखिए, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, वो एक डायनामिक प्रोसेस है. एक फ़र्द बोलने वाला है, दूसरा सुनने वाला है, या एक ग्रुप बोलने वाला है, दूसरा ग्रुप सुनने वाला है, ये एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, दूसरे उसको देख रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरे लोग उसको सुन रहे हैं. तो ये एक बड़ा डायनामिक प्रोसेस है, लाइवली प्रोसेस है. लेकिन उसको आप जो है वो एक लाइनों और शक्ल की फॉर्म में जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन है रादर डायनामिक प्रोसेस की. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन मॉडल्स आर द पिक्चर्स ऑफ द डायनामिक प्रोसेस, जिसको हम जो है वो बड़ा लाइवली और डायनामिक किस्म का प्रोसेस बोलते हैं. जो कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं मॉडल की फॉर्म में, तो वो एक पिक्चर की फॉर्म में हमारे साथ सामने आता है, जो भी हम आगे चल के पढ़ते भी हैं. तो मॉडल्स जो है वो, अगर हम सिंपल फॉर्म्स में कहें कि मॉडल्स आर अ थ्योरेटिकल एंड सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड. अ मॉडल इज नॉट एन एक्सप्लेनेटरी डिवाइस बाय इटसेल्फ, बट इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट थ्योरी. और ये हमें मतलब ये है कि खुद से ये कुछ नहीं है, ये हमें सिर्फ इशारा करता है कि कोई भी प्रोसेस है या आइडिया है वो इस तरह से हो सकता है. मॉडल जो है वो थ्योरेटिकल और सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है रियल वर्ल्ड की. मिसाल के तौर पे रियल वर्ल्ड से हम एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये सैमसंग J6 का मॉडल है. यानी जो हम डमी देखते हैं जाके मोबाइल शॉप पे, ओरिजिनल नहीं होता लेकिन उसकी डमी होती है, आपको वो दिखा रहा होता है कि उसकी डायमेंशंस ये हैं, इस तरह से होगा मोबाइल. तो a model is a consciously simplified description in graphic form of a piece of reality.
यानी ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डायग्रामेटिकल, ग्राफिकल या स्केच की फॉर्म में किसी भी रियल चीज़ की जो रियल की या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम मॉडल बोलते हैं. A model seeks to show the main elements of any structure or process and the relationship between these elements. ये डेनिस मैकवेल की डेफिनेशन है जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ के सुनाई है. तो आप ये कह सकते हैं कि जो मॉडल है बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये डायग्रामेटिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी एब्स्ट्रैक्ट या रियल चीज़ की. दूसरी बात हम ये करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो मॉडल है वो उस स्ट्रक्चर के डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, प्लस ये भी एक्सप्लेन करता है कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है. इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ये आगे चल के हम जो है वो जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. हम ये कह सकते हैं कि मॉडल्स जो हैं उनके 3 बेसिक एडवांटेजेस हैं, या ये कह लें कि देयर आर 3 मेजर फंक्शंस दैट द मॉडल्स play. First of all, they organize the concepts, they explain the processes, and they predict the outcomes. यानी organization, explanation, and prediction. These are 3 main functions of any model. And what does that mean? What is the organization, explanation, and prediction? Means a model gives a general picture of a range of different particular circumstances. मतलब यह है कि एक मॉडल जो है वो किसी एक प्रोसेस की, किसी एक स्ट्रक्चर को जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें हमारे सामने पेश करता है कि ये क्या है, इसमें क्या कुछ है, कैसे है और किस तरह से है, इसके क्या कौन सा एलिमेंट है उस एलिमेंट का, या कौन सा पार्ट है कि उस स्ट्रक्चर का या प्रोसेस का, और उसका क्या फंक्शन है. इसी तरह एक्सप्लेनेशन क्या है कि मॉडल्स एक्सप्लेन प्रोसेसेस बाय प्रोवाइडिंग simplified way of information which would otherwise be complicated or ambiguous. यानी हमारे सामने जो मॉडल है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है कि कौन सा एलिमेंट या पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर वुड डू what would be the function of that element and what would be the relationship. तो मॉडल हमारी क्या हेल्प करता है कि जो अदरवाइज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो सकती थी उसको हमारे लिए बड़े सादा अंदाज में एक्सप्लेन करता है. सिमिलरली व्हाट इज अ प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन मीन्स द आउटकम. I mean models can at least be a basis for assigning probabilities to various alternative outcomes and hence for formulating hypothesis in research. यानी मॉडल क्या करता है? मॉडल आपको आने वाले वक्त के हवाले से या उस प्रोसेस की जो आउटकम हो सकती है, पॉसिबल आउटकम हो सकती है या रिजल्ट हो सकता है, उसको एक्सप्लेन करने में, उसको प्रिडिक्ट करने में हमारी मदद करता है. फॉर इंस्टेंस वी कैन से दैट इफ यू विल यूज दिस मटेरियल in this form, the structure would come up in this form, and this structure would last for 10 years, for 20 years, for 50 years suppose. बात समझ आ रही है ना? मिसाल के तौर पे जैसे इंजीनियर जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और आपको ये कहते हैं कि अगर इस दीवार में ये मटेरियल लगेगा और इतना लगेगा और इस तरह से लगेगा तो ये दीवार इतना अरसा कायम रह सकेगी. यानी ये वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस अगर आप जो है वो ये मॉडल फॉलो करेंगे तो आपका ये स्ट्रक्चर इतनी देर तक जो है वो कंटिन्यू रह सकेगा और एग्जिस्ट कर सकेगा. सो बेसिकली यू कैन से दीज 3 आर द बेसिक एंड important functions of model, that is the explanation, that is the prediction and organization. I mean the models gives you information in an organized way. They explain the process and they predict the outcome of the overall process. Similarly, there are 3 different types of communication processes, communication models: linear model, interactive model, and transactional model. Linear model is a model in which the model explains that the communication process goes in a line from point A to point B, from point 1 to point 2. I mean, according to linear model,
the communication process is a one-way flow of communication. It goes in one line. While in interactive communication model, they say that the communication process is a circular process. It's not a linear process that starts from one point and ends at the other one. Rather, interactive model is a model. According to an interactive model, the communication process is a circular process. It keeps on going on and on and on. I mean, there is no starting or ending point. While the transactional model, this model takes into consideration the character of the message and the psychological orientation of the audience members as factors influencing the power of media effects. मतलब ये है, transactional model is a model where we do not only say that how the process starts and how it ends, while we study each and every aspect of the communication process, each and every एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. आप लोगों को याद है ना कि हमने एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हैं इससे पहले. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा है हु सेज व्हाट टू होम विद व्हाट इफेक्ट, या हमने ये पढ़ा है SMCR, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर. सोर्स क्या है, मैसेज क्या है, चैनल क्या है, रिसीवर क्या है, और फिर उस प्रोसेस का फीडबैक क्या है. तो ये चारों पांचों जो है इनको हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कंसिडर करते हैं. इसके अंदर एनकोडिंग और डिकोडिंग भी आ जाती है. सो बेसिकली यू कैन से ये सात जो है हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिडर करते हैं. प्लस इफ वी काउंट कॉन्टेक्स्ट, then it would become 8 elements of communication process. So how many elements of communication process are there? 8 in broader sense. Number 1, source, message, channel, receiver, feedback, then the context, then the overall the process of the communication include these elements of communication, which we talk in different models in a different way. So different scholars have given different kind of explanations to these elements of communication, and this transactional model tells us or guides us that the communication process can be considered in different ways while we are discussing all these 8 elements of communication. I mean, source, message, channel, receiver, feedback, encoding, decoding और the context. तो ये 8 different elements बनते हैं. तो ट्रांसैक्शनल मॉडल क्या करता है, इन 8 के 8 एलिमेंट्स को डिस्कस करता है. ऐसा मॉडल जो इन 8 या इनमें से चंद एक को, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स को कंसिडर करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, उसको हम ट्रांसैक्शनल मॉडल बोलते हैं. So guys, I hope you understand the concept, the definition of model, their importance and their types. Now we are moving towards explaining different models of communication. First of all, we talk about the first ever communication model. You can say historically first ever communication model, which was presented by Aristotle, and this is called as Aristotle's model of communication or Aristotle's communication model. According to the history, Aristotle proposed this model, actually not in the form of model, he just gave the idea that how the communication works. He said there is a speaker who has something to say, means speech, and there is an occasion or there is a context of that speech, and that is the occasion, and then he has particular audience to whom he is going to speak with, and then there is an impact or there is an effect of that communication process. So if we conclude the Aristotle's proposition of communication model, we can say that in 300 BC, before 300 BC, Aristotle proposed that there is a speaker who has something to say, that is speech, on a particular occasion to a particular audience for the sake of particular effects, for the sake of particular
objectives that the speaker has in his or her mind. So we can say that according to Aristotle, the communication process is a linear process which starts from the speaker's speech and ends at the effect on the audience. So a speaker has a speech on a particular occasion to a particular audience for the sake of particular effect. How can we understand this communication process? We can say that Junaid Ghauri is a speaker. He is giving speech on the models of the communication, and the occasion is the class, and the audience is the students, and the effect, the intended effect is that you guys understand it for the sake of appearing in the exams. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लीनियर मॉडल की एक एग्जांपल है. नाउ you guys can understand that Aristotle's model has been explained in these 5 elements: speaker, speech, occasion, audience, and the effect. Similarly, in 1920s, Harold Dwayne Lasswell, he gave the idea. Harold Dwight, not Dwayne. Harold Dwight Lasswell gave the idea of linear model of communication, and this is considered as the first ever and the first ever in the modern history, first ever model of communication in the modern history. And this model is also considered as the propaganda model और द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ मॉडल. इसको जब हम फर्दर जाके एक्सप्लेन करते हैं तो इट बिकम्स अ कम्युनिकेशन थ्योरी. सो इनिशियली Harold Lasswell gave this idea of linear model of communication, and he explained that there is a sender who wants to say something through a particular channel to particular audience with an intended effect. अब इसमें अगर आप गौर कीजिए, इफ़ यू गाइज पे लिटिल अटेंशन, यू वुड फाइंड आउट दैट दिस मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन पर्टिकुलरली वन एस्पेक्ट, एंड दैट एस्पेक्ट इज द मीडियम. अगर आप गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि एरिस्टोटल के मॉडल में हम मीडियम नहीं डिस्कस करते, हम उसमें सेंडर, मैसेज, ओकेजन, ऑडियंस और फीडबैक तो डिस्कस करते हैं, 5 एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके अंदर ओकेजन नहीं है. ओकेजन की जगह पे आप यूँ समझ लें कि मीडियम इन्वॉल्व हो गया है. तो एलिमेंट्स वही 5 हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज जो आई है वो मीडियम की आई है. सो अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड लैसवेल, who says what in what channel to whom with what effect is the linear explanation of communication process. According to Harold Lasswell, there are 3 functions of communication. Surveillance of the environment. मतलब what do you mean by surveillance? Surveillance means keeping an eye on your environment. I mean communication से आप करते क्या हैं कि आप जो है वो गुफ्तगू करते हैं, ये गुफ्तगू सुनते हैं फॉर द सेक ऑफ हैविंग इंफॉर्मेशन एंड कीपिंग एन आई ऑन योर एनवायरनमेंट. Second function is the correlation of components of society. What does that mean? That is the socialization, getting connected with the society, staying connected with the society, and with different segments of the society, or फिर different segments of society got to be connected with each other through this communication process. Then the third function is the cultural transmission between generation, and that is very important function. I mean, today if I am talking to you in this particular passion that I am talking to you, it's not my own way of talking to you guys. It has transmitted to me by my seniors. So this is the teaching culture transmitting from one teacher to another teacher, one generation of teacher to another generation of teacher. Similarly, the way your parents talk to you, this is not their own way of talking. Actually, that's what they have learned from their ancestors. I mean, from your grandparents. Your parents are behaving and teaching you and training you the way your grandparents have taught them. So things got transferred from one generation to another one, and this is the cultural transmission from one generation to another one. And how is it happening? Through the communication process.
कम्युनिकेशन के ज़रिए ही जो है एक इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है और इंफॉर्मेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं. सो यू कैन से दैट दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ linear communication model. Then there is an example of circular communication model, and that is the Osgood and Schramm's model. Osgood and Schramm, they gave the idea of communication process in a way that they proposed that the communication process does not take place in a linear form, rather it takes the shape of a circle. The communication process is a circular process. They say that Junaid Gauri is talking to the class. The class is listening to the lecture of Junaid Gauri, and they are giving their feedback in terms of yes, nodding, shaking, yawning or sleeping, or by raising some questions. So when Junaid Gauri says something, he is sending information through the channel. If there is a live class, the sound waves would be the carrier waves of the air waves would be the carrier of sound waves. यानी उस वक्त मीडियम जो है वो एयर वेव्स होंगी जिसके ज़रिए साउंड वेव्स जो है वो जुनैद गौरी के मुंह से अपने स्टूडेंट्स के कानों तक पहुंच रही हैं. तो अब उस सूरत में क्या होगा कि द लिसनर्स वुड गिव रिस्पॉन्स by raising hand or by asking question or by saying yes or by smiling or by yawning, जुमाइयाँ ले रहे हैं या खामोशी से बैठे हुए हैं. So their body language or their feedback becomes the message for the sender, that is Junaid Gauri. I mean, if right now I'm talking to you guys, if somebody raise his or her hand and ask a question, that this is the question or this is what I could not understand, so what happens? Right now I am the sender and you are the listener. Once you raise some question or you give something in feedback, you become the sender and I become the receiver. So वो वाला प्रोसेस जो हैरल्ड लेसवेल ने हमें बताया कि वो जो एक लीनियर प्रोसेस में चल रहा था, लीनियर शेप में चल रहा था, वो सर्कुलर हो जाता है. मिसाल के तौर पे सेंडर ए वाज टेलिंग समथिंग टू द रिसीवर बी थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल, तो जब बी जो है वो रिस्पॉन्स करता है तो बी सेंडर बन जाता है और ए रिसीवर बन जाता है. तो इस तरह से ये एक सर्कुलर प्रोसेस बन जाता है. अब यहाँ पे एक देयर आर टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज द एनकोडिंग एंड डीकोडिंग. Encoding and decoding are the processes of sending and interpreting information. For instance, right now I am talking to you. There is an information in my mind in abstract form. I am converting that information into words or into body language or into the written words, and then I am sending that information in gesture form, in written words, and in spoken. These three forms, verbal and non-verbal forms, in these three ways I am sending that information to you guys. So what is happening when I am converting information from my memory or from the book into my spoken words, into my body language, and into my written words? What I am doing, I am actually I am decoding information from my mind or from book into my words, into my written words, or into my body language. And when I am sending this information in these three forms to you guys, that is the encoding. यानी सादा अल्फाज में आप ये कह लें कि जब आप अपने दिमाग से या किताब से खुद चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, तो अंडरस्टैंड करने के बाद जब आप आगे सेंड करते हैं तो आप दो काम कर रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग इज़ द डिकोडिंग एंड सेंडिंग इज़ द एनकोडिंग. तो मैंने अपने दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो मैंने आप लोगों के मेयार के मुताबिक, आप लोगों के ज़हनी मेयार के मुताबिक या आप लोगों की सिमेंटिक लेवल के मुताबिक, यानी लैंग्वेज के हिसाब से मैंने उसको कन्वर्ट किया उर्दू में या इंग्लिश में. तो ये जो प्रोसेस, आप गौर करें कि मैं इंग्लिश बोल रहा था, साथ ही फिर मैंने उर्दू भी बोलना शुरू कर दी. फिर जब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ उर्दू समझने वाले लोग नहीं हैं, फिर मैंने इंग्लिश भी बोलना शुरू कर दी. तो अब मैं ये क्या कर रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन सोर्स मेरा दिमाग है, या मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, या मेरे सामने मेरी किताब है. तो वहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन डीकोड कर रहा हूँ, यानी अल्फाज में कन्वर्ट कर रहा हूँ,
रिटन अल्फाज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, स्पोकन वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ और बॉडी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब ये कन्वर्जन जो है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डी कोडिंग। नो, कन्वर्जन के बाद जब मैं इसको आप तक सेंड करता हूँ तो वो होती है एनकोडिंग। व्हेन आई ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय इंफॉर्मेशन सोर्स to your information receiver, that process is called as encoding. Okay, now what happens, you guys are listening to me, you are listening these things in English and Urdu. What are you trying to do? You are trying to understand and interpret according to your own standards. Suppose मैं जब इंग्लिश में बोलता हूँ तो आप पश्तो बोलने वाले हैं, तो आप जो है वो सबसे पहले इंग्लिश सुनेंगे, उसको फिर पश्तो में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सपोज आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड यू आर एन इंडोनेशियन स्टूडेंट. You are listening in English and you are converting that information into your own native language so that you can understand it. So that process at your end is the decoding. And then once you say, okay sir, I get it, you nod your head like this, or you shake your head like this, or you yawn, or you say, or you raise hand to ask a question. So what are you doing? You have actually decoded my message, and now you are encoding. I mean, saying yes is the encode, saying no is the encode, saying shaking head is the encode, or nodding is the encode, or raising hand is the encode. यानी अब आपने जो बात समझी है उसका आपने फीडबैक दिया है. वो फीडबैक यस की फॉर्म में हो सकता है, नो की फॉर्म में हो सकता है, इस तरह शेकिंग हैंड यानी सर नफ़ी में हिलाने से हो सकता है, और नोडिंग जो है सर को यानी हाँ की फॉर्म में हिलाने की सूरत में हो सकता है, या सवाल करने की फॉर्म में हो सकता है, या इवन वो जो आमतौर पे हम जमाइयाँ ले रहे होते हैं क्लास में, जिससे पता चल रहा होता है कि हमारा क्लास में इंटरेस्ट कम है, वो भी फीडबैक हो सकता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डियर स्टूडेंट्स, sending and receiving of information is actually happening. Both of these processes are actually happening simultaneously at both ends, at the sender's end and the receiver's end. This is the sender A. He or she is sending information to the receiver B. The receiver B receives the information and then gives the feedback. This feedback is sent back to the original sender. And once the feedback is being sent from B to A, B becomes the sender and A becomes the receiver. So at the same time, A is the sender and the receiver as well. Similarly, the B is the sender and the receiver as well. So according to Osgood and Schramm, OSGOOD, Osgood, and SCHRAMM, Osgood and Schramm, these two scholars gave the idea of interactive model, circular model. Similarly, there are some transactional models which are very important ones. Shannon and Weaver's model of communication. This model of communication is also considered as the mathematical theory of communication. Mathematical theory of communication is because in 1947, Shannon and Weaver suggested that the message is transmitted from the sender to the receiver in the form of signals. So it is the transmission of signals from one place to another one. That is why we say that this communication process is the mathematical theory of communication. According to Shannon and Weaver, there are 6 elements which are involved in communication process. That is source, encoder, message, channel, decoder, and receiver. So here again, same kinds of thing. I mean, 4 basic elements: source, message, channel, receiver. The channel has been the encoder and decoder has been induced in the communication process by Claude Shannon and Warren Weaver. These two scholars gave the idea of mathematical theory of communication, and this is also called as information model. This communication model is also known as the information model. So according to the Shannon and Weaver's model,
They say that there is an information source. From that information source, message is produced, and that message is transmitted to the receiver through a transmitter. And before the transmitter sends the message to the receiver, it goes through the channel and received by the receiver before it reaches the destination. How can we understand it? Suppose Junaid Gauri is the information source and he is transmitting the message through the voice records, through the video records, or through sound waves which are being carried out to the students by the airwaves. अब होता क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें क्लास के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, तो जब जुनैद गौरी आपसे बात कर रहा है तो इन्फॉर्मेशन सोर्स जुनैद गौरी का दिमाग है या जुनैद गौरी है, मैसेज जो है वो उसके दिमाग में मौजूद है, तो वो वर्ड्स की फॉर्म में, रिटन और स्पोकन वर्ड्स, और बॉडी लैंग्वेज की फॉर्म में वो मैसेज जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है. यहाँ पे ट्रांसमीटर अब क्या है, उसकी ज़ुबान और उसका वोकल अपरेटस. अब देखें, ये सोर्स से मैसेज इशू हो गया. अब ये मैसेज जो है वो इशू हुआ है साउंड वेव्स की फॉर्म में, तो इसको Shannon and Weaver say that these sound waves are the signals. Now these signals are received by the receiver. Right now you are listening to me through these sound waves which are being carried out through electromagnetic waves, and this internet source, mobile and laptops are involved in it. So you are receiving these signals through your receivers. जब आप मेरे से बात करेंगे तो मेरा लैपटॉप और ये जो रिसीवर है, ये मेरा अकॉर्डिंग टू शैनन एंड वीवर इट बिकम्स माय रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन. अब इससे मैंने रिसीव किया या आप इससे रिसीव कर रहे हैं, या जब मैं क्लास में बोलता हूँ तो मेरा वोकल अपरेटस ट्रांसमीटर है, आपके कान रिसीवर हैं. अब वहाँ से बात रिसीव होने के बाद मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुँचता है. डेस्टिनेशन हमारी क्या है, दिमाग है. Destination is the understanding, is the mind. So after receiving information through ears, it reaches the destination, and that is the mind. Before it reaches to the destination, they say that the process of decoding occurs. जैसे मैं पहले थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि जब मैं इंफॉर्मेशन सुनता हूँ तो मैं उसको अपने अंदाज में कन्वर्ट करता हूँ, तो उस कन्वर्जन को हम डिकोडिंग बोलते हैं. Now rest of the things are almost same here. What is the difference in Shannon and Weaver's model of communication proposed in late 1940s? They say that the sending and reception of signal, there is another important thing here, and that is the noise. Like when I'm talking to you and you are listening me, suppose right now if I give you the example, there is some internet disconnectivity or there is poor internet connectivity. What would happen? You won't be able to listen to me, you won't be able to hear my voice, you won't be able to see me as live as you are receiving me right now. So what happens? There is a distortion, there is a kind of distortion. This distortion, according to Shannon and Weaver, is called as noise. They say that noise is of three forms. Noise can be physical, noise can be semantic, noise can be psychological. Physical noise is, suppose when I am teaching you, when I am talking to you in class, there is a machine in the corridor, there is an aeroplane flying over us, and there is a lot of sound which is creating hurdle in listening to the teacher. That is the form of physical noise. Right now when I'm talking to you through this internet source, suppose there is power shortage or load shedding, there is no electricity, or somehow you lose your headphones, so you are not able to listen to me. That is the form of physical noise. Then there is another example. Suppose you are watching television and instantly someone comes in between you and your TV screen, so that person becomes physical noise. Similarly, there is a semantic noise. Semantic noise is related to the language. Suppose I'm talking in English
and the students who are from not from Pakistan, and those students who cannot understand Urdu, they are listening to me, they are understanding it. एट द सेम टाइम अगर मैं फौरी तौर पे अभी मैं उर्दू बोलना शुरू कर दूंगा तो अब उनको समझ नहीं आ रही, तो अब उनको जो समझ नहीं आ रही ये उनके लिए सिर्फ एक शोर है, और ये वो शोर है जिसको हम सिमेंटिक नॉइज बोलते हैं. सो व्हेन आई वाज टॉकिंग इन उर्दू, दोज स्टूडेंट्स amongst you who could not understand my Urdu language, my talk or my voice was just like a noise for them because they were not able to understand, and that was because of the type of language I was using. So the noise that is which is being created because of the language, that noise is known as the semantic noise. Then the third type of noise is the psychological noise. Psychological noise is the noise which is related to your psyche, your mentality, or your mind, or your psychology. Suppose you are a follower of Maulana Tariq Jamil. Suppose you are a follower of person A who belongs to political party A, and you are listening to him, but you are the follower, since you are follower of Maulana Tariq Jamil and you are follower of party A. Suppose there is a person who is talking, suppose Dr. Javed Ghamdi, you are listening to Javed Ghamdi Saab, and you are listening to a person from party B. Whatever they would say, you would listen to them, but you won't believe it. You won't act accordingly. According to Shannon and Weaver, this is the psychological noise. Psychologically, you don't believe in Javed Ghamdi. Psychologically, you don't believe in party B because you belong to party A and you belong to Maulana Tariq Jamil. So psychologically, you are indifferent from these two people, from Javed Ghamdi and from party B. So psychologically, you are not connected to them, so their information won't have any kind of impact on you. Or you can say psychologically, in simpler forms, you can say that you are sitting in the class, you are listening to the teacher, but you are thinking about your mess in the hostel. You are thinking about the birthday party in the evening that you are going to celebrate with your friends. You are thinking about hiking on the Margla Hills. So you psychologically, mentally, you are not present in the class. Physically, you are present in the class. So that creates some kind of psychological noise. So guys, according to Shannon and Weaver, the communication process works like this. Similarly, David Berlo gave the idea of SMCR model, and I've given you the example of transactional model. The Shannon and Weaver's model is the example of transactional model. Similarly, David Berlo's model is also a linear model, but at the same time it explains different elements of the communication process. According to David Berlo, there is a source who encodes a message through a channel for a receiver, and receiver decodes that message. Here is again the same kind of debate that I have already discussed with you. Same source, same encoding, same message, same channel, and same receiver. But in this model, David Berlo have explained source differently, message differently, channel differently, and receiver differently. Here he says that the communication source has particular communication skills, attitudes, knowledge, social system, and culture, which has one way or the other a direct or indirect impact on the communication skills, attitudes, knowledge, social system, and culture of the receiver, and vice versa. Okay, so what happens that when I'm speaking to you guys, I would keep in mind your communication skills, your attitude, your knowledge level, your social system, and your culture. Then I will be talking to you. So when a source wants to speak or wants to communicate with the receiver, the source, him or herself, has particular these 5 things: the communication skills, attitude, knowledge, social system, and culture, which has one way or the other a relationship or impact on the same 5 things of the receiver. यानी जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मेरा एटीट्यूड है, मेरा एक ख़ास लेवल ऑफ नॉलेज है, मेरा एक सोशल सिस्टम है, मेरा एक कल्चर है,
जो मेरे मेरी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे या मेरे मैसेज पे, मेरे मैसेज के कंटेंट पे, उसके एलिमेंट्स पे, उसकी ट्रीटमेंट पे, उसके स्ट्रक्चर पे और उसके कोडिंग प्रोसेस पे असरअंदाज हो रही है, वो उसके मुताबिक हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका नॉलेज लेवल है, जो आपका सोशल सिस्टम है, जो आपका कल्चर है। इसको आप इस तरह से समझ लें कि जब मैं आपसे बात करूंगा तो मेरा बोलने का अंदाज और होगा एज कंपेयर टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस विच इज़ बीइंग कैरिड आउट बिटवीन मी एंड माई कुलीग्स। जैसे मैं और मेरे कुलीग्स आपस में बात करते हैं, मैं आपके साथ बात नहीं करता। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, वैसे मैं अपने बच्चों के साथ, अपने अपने जो बेटे बेटियां हैं उनके साथ बात नहीं करता। जैसे मैं उनके साथ बात करता हूँ, वैसे मैं अपनी अम्मी और अब्बू के साथ बात नहीं करता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट द कम्युनिकेशन प्रोसेस of sender and receiver, the communication skills of sender and receiver, attitude of sender and receiver, knowledge level of sender and receiver, social system of sender and receiver, and culture of sender and receiver, they have direct relation with each other in the communication process, and there is an impact also. So along with that, David Berlo discusses the message. He says that the message content, elements, and the treatment of the message, the structure of the message, and how the message is being coded, all these things are important in the communication process. And then according to David Berlo, there are 5 basic channels which are involved in the communication process: hearing, seeing, touching, smelling, and tasting. I mean, according to David Berlo, these 5 basic senses of human being, they are the actual channel which are playing important role in the communication process. And there are slight explanations of these things which are very normal, and you can easily understand it once you go through the text. Similarly, George Gerbner, in 1960s, George Gerbner gave the idea of communication model. According to him, the communication process is a transactional process, and once a receiver gives information, it reaches to the destination not in the exact form which as it was happened in the real world. According to George Gerbner, there is an event, there is an incident which is being recorded or received by the man or the machine, and the receiving of that information is become E1, perceived message by machine or man, and then the machine or the man transmits that information to the general public. जॉर्ज गर्बनर का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो बेसिकली दिस इज द मॉडल ऑफ communication process at larger level, at the mass communication level. He says, George Gerbner says, that suppose there is an incident happening, suppose there is a cricket match and there are a lot of people who are the reporters, they are reporting the match for the general public. What happens? I mean, cricket match is there, you are watching cricket match, but the reporter tells you something which is not actually happening, or you are unable to see it. For instance, आप लोग देखते होंगे कि मुख्तलिफ किस्म के तज्ज़िये आप तक पहुंच रहे होते हैं। अब मैच एक ही है, उसको रिसीव करने वाले मुख्तलिफ हैं, तो उनकी रिसेप्शन डिफरेंट होगी और वो डिफरेंट अंदाज में उसको रिपोर्ट कर रहे होंगे। इसको हम मज़ीद इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज यू आर लिसनिंग टू मी एज ए स्टूडेंट, there are suppose 20 students present in the class, okay? All these 20 students go and talk to rest of the class fellows who are not present in the class today. When they will report about today's class, every one of you would report differently. And why is that so? According to George Gerbner, it is because of your perceptual dimension, your relationship between the communication agent and the overall world. I mean, your understanding about the communication process that we are having right now, because of your perceptual dimension, all of you are perceiving and receiving this information which I am giving to you in a different way, okay? So आप इसको मुख्तलिफ अंदाज में सारे ये ले रहे हैं,
और जब आप इसको पास ऑन करेंगे, व्हेन यू विल पास इट ऑन टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, there will be other things which are affecting, and that are the channels, media control, or you can say the means and control dimensions, relationship between communicating agent and the communication product. अब इसमें क्या होगा कि आपने ये इंफॉर्मेशन रिसीव की, अब जब ये आप आगे पास ऑन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गर्बनर विच वाज E1, द इवेंट 1, E was the actual happening, E1 is the happening, is the event that you have perceived, and once you pass it on to the public, the rest of the people, it becomes E2, story, S, it becomes another thing. So according to George Gerbner, actual happening that is taking place on ground, when it is reported to the public, it has become from E to E2, E से E2 बन जाती है, स्टोरी बन जाती है, और उसके अंदर और एंड इट बिकम्स अ मीडिएटेड इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने जो है वो इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया आपके पास आई, थ्रू रिपोर्टर आपके पास आई, तो वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, एक हुई सिलेक्शन कॉन्टेक्स्ट अवेलेबिलिटी और दूसरा मीडिया का कंट्रोल। अब जब मीडिया आपको रिपोर्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन, तो उसमें मीडिया की अपनी परसेप्शन भी है और उसमें उसकी पॉलिसी भी है। मिसाल के तौर पे इसको हम मज़ीद अच्छे अंदाज से इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन इन लेट्स से सीरिया, ओके, इफ़ अ मुस्लिम रिपोर्टर from a Muslim country reports, the report would come in a different way as compared to the report which is being reported by a Jew or a Christian reporter who is working for a Western or a European news channel, suppose. So perception dimension different होने की वजह से रिपोर्टर की वो perceive different करेगा और उसको रिपोर्ट डिफरेंटली करेगा। तो रिसीवर के पास क्या इंफॉर्मेशन पहुंची, और वो वाली इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं पहुंची जो हो रहा है, वो चेंज होके पहुंची परसेप्शनल डायमेंशन की वजह से और मीडिया कंट्रोल्स की वजह से। सादा अल्फाज में एक लास्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आप लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे खबरें देखते हैं, एक ही इंसिडेंट होता है, उसको एक चैनल और तरह से रिपोर्ट कर रहा है, दूसरा चैनल और तरह से रिपोर्ट कर रहा होता है। दिस इज़ ऑल व्हाट जॉर्ज गर्बनर हैज़ टू से अबाउट द communication process. He says that the information as a media consumer we receive is the mediated information. It is not the actual information that is being sent by the senders. It is not the actual information that has actually happened on ground. What we are receiving is the combination of perceptual dimension of the reporters and the media controls, and we are receiving mediated information, और वो mediated information is not the actual happening that has happened on ground, rather this is the information which has been affected by the perceptual dimensions of the machine and the reporter who are recording that information, and it has been affected by, the information has been affected by the media controls, the media policies also. So this is the information that we are receiving is the mediated information. I hope guys you have enjoyed the lecture about the types of model and the functions of model, and then we have studied different models. So for now this would be enough, and if you have any questions you can ask me in our classes. Thank you. Assalamu alaikum.